हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल MDS Pharmacy। MDS Pharmacy का ऐप अभी भी अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स के लिए और आपको ये जो सब PPTs मिलेंगे वह सब वहाँ पर अपलोडेड होंगे। B Pharmacy Semester 1 Remedial Biology Unit 1 and Chapter 1 that is Living World। लिविंग वर्ल्ड इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, देन 5 kingdoms of the life and basics of the classification, silent features of the Monera, protista, fungi, animalia and plantae virus। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी? जो वर्ड है वो ग्रीक का वर्ड है जिसमें बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉजिक मीन्स स्टडी ऑफ। Then biology is the study of living and the living organisms. So life can be defined as the property या तो quality of the living organism and the distinguish or non-living in some functions like growth, metabolism, response to the stimuli and production. The next is characteristics of the living things, जिसमें कि growth आता है, reproduction, metabolism and response to stimuli. फर्स्ट इज ग्रोथ। ग्रोथ इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग बीइंग के लिए। मास होता है और इंक्रीज इन नंबर होता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ द मटीरियल ऑन इट सर्फेस। द नेक्स्ट इज ग्रोथ इन लिविंग बीइंग टेक्स प्लेस ड्यू टू द इंटरनल प्रोसेस दैट इज सेल डिविजन। सेल डिविजन then plants shows the continuous growth throughout their lifespan while the plants show growth up to a certain age. Then reproduction all living organism produces offsprings by the process of reproduction is important process for continuing the species, lineage of the species. Then reproduction can be either of two types, that is sexual reproduction and asexual reproduction. fungi जो होता है उसमें asexual reproduction होता है where yeast and hydra by budding. Then plantaria flatworms होता है by regeneration. Then unicellular organism like bacteria हो गया, unicellular algae हो गया, amoeba हो गया, या reproduction is synonymous with the growth, that is increase in the number of cells. The next is metabolism all living organism made of chemicals belonging to the various classes like sizes and functions. The chemical within the living organisms are constantly being made and changed into and other biomolecules. The sum of total all the chemical reactions occurring in the body is metabolism. हमारी बॉडी में जो भी chemical reactions होते हैं उसे हम metabolism बोलते हैं. metabolism further दो types में divide होते हैं, that is anabolism and catabolism. no living object exhibit non living organisms में metabolism नहीं होता है. response to external stimuli, लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स करते हैं सराउंडिंग और एनवायरनमेंट को, और रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई कुड भी फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, या तो बायोलॉजिकल हो सकता है. प्लांट रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, water, temperature, other organism, pollutants, etc. Organism can senses and response to environmental clues. Photo period effect reproduction in the seasonal breeds both plant and animals. Organism handle chemical entering their body and aware of their surrounding. Human being the only organism which has self consciousness. Diversity in the living world. बायोडाइवर्सिटी, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं और पे उसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. द नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर. इट इज अ सिस्टम ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिजम्स. ओके, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड. प्लांट एनिमल्स आर नोन इन द लोकल एरिया बाय द लोकल नेम. जो भी ऑर्गेनिजम्स को नेम करते हैं उसे हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं. जैसे कि देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड. सो जो प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे लोकल एरिया में, हम उसे लोकल नेम से पुकारते हैं. सो जिसका लोकल एरिया होगा उसे अलग अलग नेम्स देते जाएंगे. थोड़े लोकल एरियाज में उसे अलग नेम से बुलाएंगे और थोड़े लोकल एरियाज में उसे अलग नेम से बुलाएंगे. तो वो so it is impossible to remember all the local names of a particular organism or hence the nomenclature system has been introduced to remove the confusion.
Okay, the next is identification. Identification is the process of assigning a pre-existing taxon name to an individual organism. ICBN, International Code of Botanical Nomenclature, ICZN, the nomenclature has been made like International Code of Botanical Nomenclature and International Code of Zoological Nomenclature. The next is binomial nomenclature. Binomial nomenclature एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नेम स्पीशीज को जो नेम दे रहे कंपोज टू कंपोनेंट्स है वो कंपोज ऑफ जेनेरिक नेम एंड द स्पीशीज नेम. Colores Linnaeus invented the modern system of binomial nomenclature. The next is rules of nomenclature. Biological names are usually written in the Latin and italics in font. And scientific names usually contain two parts. First part is the genus and the second part is the species. जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में देखा है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक जेनरिक नेम और एक स्पीशीज नेम. वैसे ही यहाँ पे साइंटिफिक नेम जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो कि हम जीनस बोलेंगे और जेनेरिक नेम जो कि जीनस हो गया हमारा, एंड सेकेंड वर्ड दैट इज स्पीशीज, उसे हम स्पेसिफिक स्पीशीज बोलेंगे या तो स्पेसिफिक बोलेंगे. द नेक्स्ट इज जीनस नेम स्टार्ट फ्रॉम द कैपिटल लेटर while the species name start with the small letter. This is the big difference. And also botanical name is printed in the italics. Like आप यहाँ पे जो italics लिखा हुआ देख रहे हैं ना, ये इटैलिक्स लैंग्वेज हुई, ये इटैलिक्स फॉर्मेट हुआ लिखने का. ये जो अदर फॉर्मेट्स है, ये अदर जो फॉर्मेट है उससे ये अलग लिखा हुआ है इटैलिक, राइट. ये अलग राइटिंग है, ये राइटिंग को हम इटैलिक्स बोलते हैं. तो जो भी बायोलॉजिकल नेम होता है वो इटैलिक्स में लिखा होता है. द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन. इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू categories based on easily observable characteristics. The next, taxon. Taxon, the scientific term for any unit used in the science of biological classification, is called taxon. Taxonomy is the science of defining group of biological organisms on the basis of shared characteristics and giving names to those groups. Carolus Linnaeus जो है वो is regarded as a father. He is regarded as a father of taxonomy. Then process of taxonomy में हम 4 स्टेप देखेंगे, that is characterization, identification, classification and nomenclature. सिस्टमिक. द वर्ड सिस्टमिक है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, विद सिस्टमा मीन्स सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. जो भी सिस्टमिक अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं हम सिस्टमिक्स. में कैटेगरी. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें कि हेरिटेज में होता है, लाइक स्टेप बाय स्टेप इंक्लूडेड होता है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में. Each state represents in an increasing organizational complexity. Next includes the species. Species जैसे कि हमने पढ़ा है कि group is a group of individual in which the individual can be interbreed among themselves. Example, Magnifera indica. Next is genus. Genus is a group of closely related species called genus. A group of closely related species called as genus. Then example, potato, tomato, brinjal and other 3 different species but all belongs to the same genus, like Solanum. The next is family. A group of closely related genera is called as a family. Family are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of the plant species. Example, 3 different genera, Solanum, Petunia and Datura are placed in the family of Solanaceae. The next is order. A group of closely related families is called order. Order and other higher taxonomic category are identified based on the aggregates of characters. And the next is class. Class is a major category made of one or more related order that possess certain similar correlated characters. The next is phylum. A group of close related class is called phylum. In the plant kingdom, phylum has been replaced with divisions. The next is kingdom. A group of all related phyla is called as kingdom.
नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसेस है उसका किंगडम, विच इंक्लूड्स द किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन नेक्स्ट स्पीशीज. ओके, देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स विद देयर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज. देन कॉमन नेम, ये हमें रिमेंबर करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हम एक पढ़ लेते हैं. मैन, बायोलॉजिकल नेम हो गया होमोसेपियंस, जीनस होमो हो गया होमिडेसी डी. देन ऑर्डर हो गया प्राइमेट्स, क्लास हो गया कॉर्डेड, देन फाइलम और डिवीजन हो गया मैमेलिया. ओके, ऐसे ही हमें पूरे ऑर्गेनिजम्स के पढ़ते जाना है. कॉमन नेम ऑफ मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीड, अदर्स. The next is taxonomical studies, storehouses of information and species which can help in identification and classification of organism are called taxonomic aids. Study of various species of plants, animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry, etc. These help in identification and naming of classification of organisms. The next is taxonomical aids. Taxonomical aids में first आता है herbarium. Herbarium, it is a store house of a plants. herbarium हम उसे बोलते हैं जो कि store house, plants का store house होता है, उसे हम herbarium बोलते हैं. जो plants का store house होता है हम उसको herbarium बोलते हैं. The next is specimens. जो भी specimens होते हैं वो dried होते हैं, pressed होते हैं and preserved होते हैं शीट्स में, जो कि बुक्स में या पेपर्स पे जो भी है ड्राइड हर्बेरियम्स होते हैं उसको स्पेसिमेंस जो भी होते हैं उसको पूरा पेस्ट करके रखते हैं. These sheets are arranged systematically according to the universally accepted system of classification. Then herbarium sheet contain the information regarding the date and the place of the collection, and who has been collected and from which area it has been collected, and its scientific name, families, etc. Genus, family, etc. Then it provides the critical referral system in the taxonomical studies. Then next आता है botanical gardens. Botanical gardens वो जगह होती है जहाँ पे सारे plants available होते हैं, like a nursery type. Purpose of research for the नर्सरी टाइप होता है, लेकिन ये रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पस के लिए ही यूज़ होता है जो भी बोटानिकल गार्डन होते हैं. Some of the famous botanical gardens like Indian Botanical Garden, Calcutta, National Botanical Research Institute, Lucknow, and Garden of Medicinal Plants and North Bengal University, West Bengal. The next is museum. Museum is the place of collection of preserved plants and animal specimen for study and reference. इंसेक्ट्स जो भी एनिमल्स जो भी होते हैं वो जार कंटेनर में केमिकल्स डाल के प्रिजर्व करके रखते हैं, सोल्यूशंस डाल के, ताकि उसमें से कोई स्मेल ना आए या वो कम्प्लीटली डैमेज ना हो जाए. इस वजह से उसको सोल्यूशन से प्रिजर्व करके रखते हैं जार के अंदर. और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स बॉक्स में कलेक्ट करके रखते हैं फॉर द म्यूजियम. एंड लार्ज एनिमल जो भी होते हैं उसको उस टाइप में प्रिजर्व करते हैं. Then zoological park, तुम सबको पता है. Zoological parks is the place where the wild animals and the protected are protected under similar to the natural habitat. Some of these zoological park is Nehru Zoological Park, Hyderabad, Zoological Park, Mysore, Chennai Zoo. The next is key. Key are used for identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities. Keys are analytical in nature and based on contrasting characters in a pair called couplet. Out of two proposed characters, only one which is relevant is accepted while the other is rejected. Each statement is a key called a lead. The next is other taxonomical aids. फ्लोरा हो गया, मैमल्स हो गया, मोनोग्राफ्स हो गया, कैटलॉग्स हो गया और अदर क्लासिफिकेशन एड्स हो गया. देन नेक्स्ट दे हेल्प्स इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन. और मोनोग्राफ में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टैक्सॉन, पर्टिकुलर टैक्सॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है मोनोग्राफ्स में. ओके, एंड हियर एंड विद द सेशन.
Thank you. If you have any queries, please let me know in the comment section.